Hello my dear students. In this video we will discuss very important topic, total internal reflection. Total internal reflection. Before discussing it in details, let us construct the ray diagram. This is the interface separating the two media. ऊपर इसके एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है और नीचे डेंसर मीडियम है. दिस इज डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज you can say mu b. This is object placed at this point O. Let us say that this is the incident ray OA. Angle of incidence is 0, so angle of refraction will also be 0. It is refracted straight like this way along AN. Now I further increase the angle of incidence like this way. So you draw the normal. This A2 OA2 is the incident ray. This is angle of incidence. Now the refracted ray slightly bends away from the normal because it is going from denser to rarer medium. Its speed will increase. Now what I do, I take this point. This point is A3 point of incidence. यहाँ पर मैं देखूँगा तो यहाँ एंगल जो है हमारा बढ़ गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ दिस AN1 instead of going like this way, this is refracted like this way along surface. So this angle, that is the angle of refraction, becomes 90 degree, and this angle of incidence in denser medium is called critical angle, for which this angle is 90 degree. Now what I do, I further increase the angle of incidence beyond this. I see this point is, let me say this is A4. Now light, instead of going grazingly, it is reflected back along A4 and 4. So this is total internal reflection. That is the phenomenon of reflecting light to denser medium by an interface separating two media when angle of incidence is greater than critical angle is called TIR. That is total internal reflection. एसेंशियल कंडीशंस है इसके लिए. एसेंशियल कंडीशंस क्या है? दैट इज द फर्स्ट इज लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम. और बच्चों दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ देखिएगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी greater than critical angle. Now we can apply, you can see that at this total internal reflection, angle of incidence is equal to C and angle R, it is equal to 90 degree. This is angle of incidence. So by Snell's law you can write down that is mu B sin C, it is equal to mu A sin 90 degree. Now sin 90 degree is equal to 1. So immediately we can write down that is sin C, it is equal to mu A upon mu B, or you can say 1 upon sin C, it is equal to
mu b upon mu a. So you can say that this is the refractive index of medium B with respect to A. It can be written as mu. That is, this mu is equal to ratio of the wavelength of light in vacuum to given medium. So we can write down from this equation, that is cross multiply करिएगा, sin C will be equal to 1 by mu, और mu की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 upon lambda naught upon lambda m, and therefore sin C is equal to lambda m upon lambda naught. This is the value of critical angle. Now if critical angle is given, you can find out the refractive index, and if refractive index is given, you can find out the critical angle. Similarly, if wavelength in medium is given, you can find out the wavelength in vacuum. So this phenomena of total internal reflection finds extensive use in diamond sparkles. Why? The case is very simple, that is the diamond is cut in such a way, उस हीरे को इस तरह से तराशा जाता है कि जब लाइट एंटर करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, and the refractive index of the diamond is very high. So before coming out, the light will suffer total internal reflection. That is why the diamond sparkles in, you can say, dark also. Similarly, in case of the optical mirage, जिसमें आभास होता है कि हमारे पास मरुस्थल में पानी है, the atmospheric जो एयर है that is very dense. जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाते हैं हम एटमॉस्फेयर में, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, एयर की डेंसिटी बढ़ती डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम से नीचे की तरफ जब एयर आएगी, आई विल एक्सप्लेन, दैट इज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम, और हमारे को वहाँ पर इमेज दिखाई देता है. सिमिलरली इट फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन, यू कैन से, द ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स में क्लाडिंग होती है, और ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही फाइन, हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक का कैपिलरी टाइप इक्विपमेंट है, उसके ऊपर क्लाडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जो हमारी ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कोटिंग होती है. तो लाइट जब एंटर करेगी ऑप्टिकल फाइबर में, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. सो लाइट एक बार एंटर कर जाएगी हमारे ऑप्टिकल फाइबर में, दैट विल कंटिन्यू टू सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिफोर कमिंग आउट थ्रू द अदर एंड. सो दिस optical fiber finds extensive use in medical science, that is in endoscopy, to study the internal organs of the body. in telecommunication आप देखते हैं आजकल ऑप्टिकल फाइबर चला हुआ है इंटरनेट की स्पीड के लिए, दैट इज़ इस हमारे ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी का लॉस भी नहीं होता है. सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and we will discuss its numerical in the next video. Thank you.